আসলে কেমন লাগবে কেমনটা লড়াবি না দেখো লড়াবি না লড়াবি না লড়াবি
क्या देखते हो बैग ना रे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दो मैंने नॉब वॉल्यूम का नॉब दो नहीं था, वो नया लगाया है दो। ठीक है, ये स्विच वगैरह है, ये ऑन पावर ऑन का स्विच है,
लेकिन ये काम नहीं करता है, अंदर से जाम हो गया। ठीक है, तो ये मॉडल का जो स्विच आप देख रहे हैं ये मार्केट में नहीं मिला है, तो फिलहाल मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। और अंदर से जो कनेक्शन मैंने किया है ये देखिए, ये पावर के लिए 2 वायर मैंने निकाल के रखा है। ठीक है, खाली चलाने के लिए। और यहाँ से जो 2 वायर ट्रांसफार्मर में गया था उसको निकाल के साइड कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बोर्ड में देखिए। ठीक है, ये जो ड्राइवर बोर्ड और वॉल्यूम बेस ट्रैवल का बोर्ड है, इसी के ऊपर पावर सप्लाई भी है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर फ्यूज लगाया है और डायोड दिया गया है, ट्रांजिस्टर दिया गया है। ठीक है, पावर सप्लाई और ड्राइवर ट्रांसफार्मर भी यहाँ पर है। और यहाँ पर प्रीसेट लगा हुआ है, जो भी यहाँ पर जो एक एक करके जो ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगाया हुआ है, ये मैंने सारा नया चेंज कर दिया है। ठीक है, जो पहले से लगा हुआ था वो ख़राब हो गया था। और ये इसका नंबर है 2634C2634 का ट्रांजिस्टर है। ठीक है, यहाँ पे जितना भी 1 2 3 4 करके जितना भी ट्रांजिस्टर छोटा वाला लगा हुआ है सेम नंबर का लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 ट्रांजिस्टर लगाया है 2060 का। ठीक है, 2060 का ट्रांजिस्टर 2 यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर 3055, ठीक है, पुराना वाला जो लगा हुआ, ये पुराना वाला ट्रांजिस्टर था। ठीक है, इसको मैंने निकाल दिया है और यहाँ पर नया लगा दिया है 2 3055 का ट्रांजिस्टर 2 नया ला के डाल दिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पीछे साइड ये इसका बैटरी का सप्लाई है। ठीक है, बैटरी का सप्लाई 12 वोल्ट DC। और यहाँ पे देखिए ये हो गया स्पीकर का आउटपुट, ये कॉमन, ये 4 ओम 8 ओम 16 ओम। ठीक है, आप यहाँ से स्पीकर चला सकते हो। और यहाँ पे ऑक्स का केबल के लिए ये कनेक्शन दिया गया है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने कितना टाइम लगाया है इसको रेडी करने में मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, काफ़ी टाइम लग गया है इसको रेडी करने में। फिलहाल देखिए अभी मैं पावर दूंगा तो पावर ऑन हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। यहाँ पर देखिए जो पावर का कनेक्शन मैंने निकाल के रखा था इसको मैंने सीरीज में डाल दिया है। और ये इसका स्विच है। ठीक है, ऑन करते हैं स्विच को, ये देखिए पावर यहाँ पे ऑन हो गया है। ठीक है, अभी देखिए लाइन हमारा ओके है और ये एम्पलीफायर भी ओके हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम माइक लगा सकते हैं और इसमें 2 ट्विटर बजा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और कमेंट में बता देना कि आपके पास अगर इस तरह का एम्पलीफायर है तो आप उसको बजाना चाहेंगे या रिपेयर करना चाहेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।